Good morning, ma'am. Good morning, Vita. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Hope you all have the books with you, class. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, class. What we were doing? What did we do yesterday? If you could tell, class. Ma'am, yesterday we did Flowcharts. flowcharts of civics. Okay. Yes, ma'am. Hope you all have done the flowcharts. Hope you all have done the flowcharts. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Fine. See, whatever work you are doing, it has to be in your fair notebooks, because once the school opens, you have to show your notebooks, right? You have to give it for corrections. Now, can I have the cameras on, please? All the children. Hope you all have the books with you, class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. We were doing the reading part, yes? Okay. Can you tell me where did we leave the class last? Class? Ma'am, Can we you have hear done the me? flowchart of civics. No, before the flowchart. Flowchart was done. The flowchart was done because yesterday the net was not working over here, no? So I could not take this Zoom class. Ma'am, you told about why power sharing is desirable. Okay, now we'll proceed on to the next topic, that is power sharing in modern democracies, right? Yes, ma'am. Right, class? Yes, ma'am. But I'm sharing the screen with you all. Okay. Excuse Good me, morning, ma'am. ma'am. Good morning. Good morning, Beta. Good morning. Excuse me, ma'am. Yes, Beta. Someone saying Ma'am, something? yes, ma'am. Ma'am, what is prudential? Who will tell in the class what is prudential? The other day I explained you what the prudential reasons of power sharing. Do you remember that? Class? Do you remember that? Yes, ma'am. Ma'am, based on No? calculation of gains and losses. Yes, based on calculation of gains and losses, right? Very good. Now, anything that is not clear or understood in that topic which we did, moral and prudential reasons? Class? Moral Ma'am, reasons were please done or explain the not? legitimate government.
Huh? Explain the. Legitimate government. Okay. Moral reasons for power sharing one. Just a second, I'll just tell you. Now, when we talk of the moral reasons, the first point is it is the very spirit of democracy, right? Then second is, what was the second reason, moral reason for power sharing, class? Ma'am, it Ensures legitimate. Yes. Government. Yes, it ensures legitimate government. Now, what is legitimate? Do you know? Literal meaning of legitimate? Legal. Ma'am, legal. Something? No, legal, yes. There's something that comes with proper. Something that comes with proper channel or proper system, right? Now, when we talk of the legitimate government, we are talking about a government in democracy is formed by the people. That day also I told you that democracy is all about of the people, for the people, by the people. When we talk of the government, right? Now, when we say government of the people, by the people, and for the people, right? That means this legitimate part ensures that the people, the rulers, those who are there, the representatives, those who are there in democratic form of government, they are the ones who are chosen by the citizens of the country, right? Yes. Right, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So legitimate means in context of this government part, it tells you that the government that comes to power with the consent of the general public, because we in the elections we vote for our representatives, and those whom we choose to be our representatives, they only come to power and ultimately they form a legitimate government, right? Right, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, इतना क्लियर हो गया? Power sharing के moral and prudential reasons are clear to each one of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Fine. Anything that I need to explain again? No, ma'am. No? Very good. That is fine. We have done flowcharts for this particular chapter. Yes, ma'am. We have done, no? We are doing. We were doing yesterday. I think Ma'am, not you have all. given us 2 flowcharts. One by one, but one by one. हाँ जी बोलो. And we have done 2 flowcharts. We have for this chapter we have done two flowcharts, right? Yes, ma'am. Okay. Now coming to the last topic of the chapter, that is power sharing in modern democracies, right? See, when we talk of power sharing, screen is clear to every one of you. Screen is clear to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Power sharing in modern democracy. Now, when we talk of modern democracy, we know that there are different forms in which power is shared in a democratic form of government, right? First is vertical, horizontal. I think we discussed about this vertical and horizontal power sharing, right? Yes, ma'am. See, this horizontal power sharing is also called as distribution of power among different organs of the government. Among different organs of the government, right? Right, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Forms of power sharing. First is
power is shared among different organs of the government. Right? Talk of different organs, we are actually talking about the horizontal distribution. Now, horizontal is a straight line where there are three segregations. ठीक है, इसको ऐसे समझो कि सेम लेवल पे रह के ये जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है अलग अलग पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करते हैं. राइट राइट क्लास. Yes, ma'am. Yes, ma'am. These organs, they remain at same level but exercise different powers, right? Yes. और ये organs होते कौन है? तीन जो organs है गवर्नमेंट के कौन कौन से होते हैं ये? Who will tell? Ma'am, judiciary. Ma'am, executive, legislative, and judiciary. Yes. Executive, Ma'am, legislature. legislature. Judiciary. We all know कि इन तीनों की पावर्स अलग अलग होती है ना? Yes, ma'am. Yes or no? अलग अलग पावर्स होने के बाद भी जो जुडिशरी आपकी होती है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जुडिशरी कीप्स अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दैट दे आर नॉट using their powering, or they are not trying to violate rules or the laws, right? Right class? Yes, ma'am. Yes, बेटा हाँ fine it is very important that the executive and legislature, they work in the prescribed the laws, the rules that are given in the constitution. They need to abide by that, and they have to work in accordance to those laws, right? Neither the prime minister nor the president can exercise supreme control over anything. They are bound by the law. I hope I am clear. Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. Beta clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Fine. ma'am. Now, see, when we talk of this distribution of power among the different organs, we that this system is also known as the system of checks and balances. Right? Now, why it is a system of checks and balances? Because I told you, judiciary keeps a check on the working of the executive and the legislature. Right? And because one organ Right, beta? keeps check on the other. Right, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Children, Yes, ma'am. What did you say, beta? See, power sharing among different organs of the government, also called as horizontal distribution of power. Distribution of power, right? Or the system of checks and balances. Clear? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, class, can you see the screen? Yes, ma'am. Beta, Yes, can you see ma'am. the screen, children? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए, ये हमने तीन चीजें देखो, पावर शेयरिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमने तीन चीजें करी अभी तक. पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. It is also called as the horizontal distribution of power, and this whole system of power sharing among different organs of the government in horizontal form is also called as the system of checks and balances. I hope these three things are completely clear and understood to each one of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Class? Fine. Any doubts in this? Any doubts in this? No, ma'am. Chaliye. Then coming to the second form of second form Ma'am, your voice is breaking. is Yes, ma'am. my voice is breaking. कोई बात नहीं बेटा, signals are weak. Now Ma'am, your voice is breaking. हाँ जी बेटा. Now when we talk of second form of power sharing, that the powers are shared among different levels of government. You know what is levels of government? Class, Ma'am, like state government, can you hear central, me, children? Ma'am, local government. ma'am, local government, central Central government, government. state government. When state government. Union government, state government, and local government. Right. That when we say when power is shared among different levels of government, actually talking about a straight line divided into powers, right? Like if you can see the screen, you will see that on the top we have the government, then in between we have the state government, and the lowest level of government that we have is the local government, right? Right, class?
right? Beta, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see, Yes, ma'am. we all know that government, it is also known by the name of union government, right? Now, do you know that the central government is the highest form of government in our country? Then we have the state governments, because we all know that the country is divided into small uh, country is divided into small, there are divisions in the country. So the powers are shared among the state governments also. Recently, we had witnessed assembly elections in UP, right? Right, class? Yes, Yes, ma'am. yeah. Yes, ma'am. Recently we Yes, had ma'am. witnessed assembly elections. Now, assembly elections are done for the choosing of chief minister, right? See, when we talk of the government levels of government, or when powers is shared in vertical form, see, sharing among different levels of government is one way of explaining it. Second is, it is also called the vertical distribution of power, right? Ma'am, Vertical distribution of power. among the Yes, ma'am Bipi? state government, central government, ma'am, which one is more powerful? More powerful. Central government was always powerful, beta. We all have read in class 7th also, no? In 8th also we have read that when the power is shared among different levels of the government, in that central government, it exercises supreme control. But in our country, the central government cannot order the state government to go for certain provisions. They can only, tell them that these are important issues which should be looked into, and accordingly. You have read of the state list, union list, and concurrent list. Do you remember that? Do you remember the list system that we discussed in class 7th and 8th? Do you remember that, beta? No, ma'am. Yes, Okay. Okay. Anyone in the class who knows what is this list system? Yes. Do you know what is this list system, class? Any one of you? Beta? Recording कर दी मैंने? Is the power? Beta. But when we say list system, we are actually talking about the subjects on which these two governments, central government and state government, they make laws. है ना? Right? Yes, ma'am. अब ये जो चीज लॉ बनाने वाला है उसको हम बात करें, ठीक है? अभी आप इतना मोटा मोटा समझो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, ये एक ही उस पे रह के डिफरेंट पावर्स जो है वो एंजॉय करते हैं, ठीक है? जैसे लेवल्स, इनके लेवल्स हैं, 3 टियर्स बोलते हैं इसको, 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। अभी जो 3 लेवल्स होते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्सरसाइजेस सुप्रीम कंट्रोल, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने जैसे इनको रीजनल गवर्नमेंट भी, रीजनल किसी रीजन की जो गवर्नमेंट होती है वो भी कहा जाता है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, इनका काम अपने एरिया के, अपने रीजन के लोगों के लिए डेवलपमेंट करना होता है, और अकॉर्डिंगली, इन अकॉर्डेंस टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, ये लोग लॉज बनाते हैं, ठीक है? ये जो स्टेट लिस्ट होती है, इट इज मेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉज। आपका जो यूनियन लिस्ट होती है, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि लोगों के बेटर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो लॉज बनाती है। इतना क्लियर हुआ सबको बेटा? Yes, इतना क्लियर हुआ? ये जो Yes, ma'am. कॉन्करेंट लिस्ट होती है बच्चे, इस कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर कॉमन फॉर बोथ द गवर्नमेंट्स, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं, इन कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स बने होते हैं, दोनों गवर्नमेंट्स अपने अकॉर्डिंगली जो है इसके अंदर लॉज फ्रेम करते हैं, राइट? या लॉज बनाते हैं। क्लियर? Okay, ma'am. फाइन? इतना क्लियर हुआ? Means it is same for both the government. हाँ, concurrent is common subjects for both the governments. State list has subjects only for the state government. Union list has subjects only for the union government, and concurrent list is the list that has common subjects
for both the governments. I hope I am clear. Yes, ma'am. Fine. Now, this vertical and horizontal division is clear and understood to each one of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए. Now, coming to the next, the third form of power sharing. See, we have read that in a country there are, social groups, there are religious groups, there are community groups or the caste groups that are there, right? Uh, I hope you have heard about these names, social groups or the linguistic groups or the religious groups or the caste groups that we have. Have you heard of this, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Now these social groups, linguistic groups, religious groups, these also have certain powers with them, right? These also have certain powers with them, and power is also shared in modern democracy among these social groups, linguistic groups, religious groups, or the caste groups or the communities, which different communities which are there. I hope I am clear in this. Yes, ma'am. So this is the third form of power sharing in modern democracy. Now see, you must be wondering that how these groups can be, sharing power. Yes or no? Yes, ma'am. Any one of you in the class, if you could tell me that how these social groups or the linguistic groups, do they have power to bring changes in the governance? Do they Yes, exercise ma'am. power? What Yes, kind ma'am. of power do they exercise? What kind of power do they exercise, class? If you could tell me. Ma'am, sometime, ma'am, they do, ma'am, protests. Very good, very good. Ma'am, Sometimes they do protest. Sometimes they do because protest, they are and in large majority, ma'am. If they will not vote, ma'am, then, ma'am, the government will not be. yes, will not be formed. Exactly. See, these social groups अपने आप में they are quite strong and powerful. क्योंकि देखो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं बेटा, डेमोक्रेसी में हर सोशल ग्रुप हर कोई इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हमने सबको वोटिंग राइट्स देके रखे हैं. ठीक है. अगर कोई भी सोशल ग्रुप बाइकआउट कर देता है इलेक्शंस को, तो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो इरप्ट हो ही जाती है. तो ये सोशल ग्रुप्स जो हैं, इनको जब ये लगता है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज गलत हैं, या इन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, या इन लोगों को इनके ड्यूज प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो सोशल ग्रुप्स हैं ये प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एंड दे पुट देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो कहीं ना कहीं दे आल्सो हैव अ गुड शेयर ऑफ पावर इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इन लोग Yes, ma'am. ऐसा नहीं है कि इनकी कोई से नहीं होती है. दे ऑफ कोर्स दे हैव अ से इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. दिस पार्ट इज क्लियर एंड अंडरस्टूड. Yes, Beta, ma'am. clear and understood. Okay, coming to the fourth form of government power share, fourth form of power sharing. Fourth form of power sharing is among pressure groups, political parties, अब आप ये समझो, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ये भी अपने आप में ये लोग भी पावर शेयर करते हैं. ये कैसे शेयर करते हैं पावर? जब आपने देखा होगा इलेक्शंस होते हैं, है ना. इलेक्शंस में क्या करते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये क्या करती हैं, ये कैंपेनिंग करती हैं. ठीक. अब जब ये कैंपेनिंग करती हैं, तो कैंपेनिंग के दौरान ये लोग क्या करते हैं, एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करते हैं. ठीक है. आपने देखा होगा अभी जो इलेक्शंस हुए यूपी में, या पंजाब में, या गोवा में, या मणिपुर में आपका, या फिर जो है आपका उधर उत्तराखंड में, ये जो इलेक्शंस हुए, आपने देखा होगा हाउ द पीपल, हाउ दीज पॉलिटिकल पार्टीज they were able to फॉर्म पब्लिक ओपिनियन. पंजाब में अगर आप देखो, पंजाब में हमेशा जो है एस्टैब्लिश्ड पार्टीज ही जो है पावर में आ रही थी. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पंजाब में कोई न्यू पार्टी, जो कि एक स्टेट पार्टी थी, जो एक रीजनल पार्टी थी, उसने अपना जो है अपने पॉलिसीज की वजह से या अपनी प्रोमिसेस की वजह से जो है दे कुड मेक पीपल अंडरस्टैंड कि भाई वो लोग भी डिजर्विंग है, वो लोग कुछ कर सकते हैं. तो लोगों ने क्या करा, आम आदमी पार्टी को
के मेंबर्स को सबसे ज्यादा वोट करके जो है पंजाब में मेजॉरिटी पार्टी विन बना दिया और उन्होंने उनको जो है इनवाइट करा टू फॉर्म दी गवर्नमेंट। तो ये लोगों की पावर ही तो थी और पॉलिटिकल पार्टीज का जो है उनका इन्फ्लुएंस था, उनकी पॉलिसीज थी, उन्होंने जिन्होंने एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करी। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, रेगुलर पार्टीज जो आ रही थी वही आती, है कि नहीं Yes, ma'am. बेटा, है ना। और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि ये लोगों को जो है अपनी लोगों को गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, उनकी जो लूप होल्स होते हैं, उनकी जो वीक पॉइंट्स होते हैं, उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स होती है उनको बताते हैं। और उनको बताने के साथ साथ ही दे टेंड टू मेक पब्लिक ओपिनियन, जिससे कि पब्लिक जो है, पब्लिक में उनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बढ़ता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज क्लियर हो गया सबको अच्छे से। Yes, ma'am. नाउ कमिंग टू दिस प्रेशर ग्रुप्स। ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा? प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो आपस में जो है एक साथ आते हैं, जिनके एक कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये जैसे आपने सुना होगा ट्रेड यूनियंस वगैरह, आपने ट्रेड यूनियंस के बारे में आपने पढ़ा है, स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? Yes, हैव यू ma'am. रेड अबाउट स्टेट? हाँ, ये जो ट्रेड यूनियंस होती हैं और जो आपकी जो स्टूडेंट यूनियन होती हैं, ये कहीं ना कहीं दे एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। क्यों? क्योंकि दे आर Ma'am, your voice is not audible. Okay. Now is it clear? Now my voice is clear, beta? Yes, yes, Oh, ma'am. okay. तो ये जो आपकी जो स्टूडेंट यूनियंस होती है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये जो स्टूडेंट यूनियन हो गई, ये ट्रेड यूनियंस हो गई, और इस तरीके की कई सारे कुछ लोग जो है कास्ट ग्रुप्स के यूनियंस बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये लोग ना कहीं गवर्नमेंट की जो शॉर्ट कमिंग्स होती है उनको हाईलाइट करते हैं। और गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी इनिशिएट करती है तो वो उनपे प्रेशर क्रिएट करके, अगर वो पॉलिसीज इज नॉट इन द फेवर ऑफ द जनरल पब्लिक, इफ इट इज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इन गवर्नमेंट के ऊपर, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके, डेमोन्स्ट्रेशंस करके, ठीक है, एजिटेट करके उनको प्रेशराइज करते हैं टू चेंज द पॉलिसीज। है ना भाई, कोई चीज अगर लोगों के फेवर में नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉर दैट। भाई हमेशा इनिशिएट, हमेशा वही चीज आनी चाहिए जो कि जिसका कि कुछ ना कुछ जो है इम्पोर्टेंस हो, या जो लोगों के वेलफेयर के लिए यूज हो रही है। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, पॉलिसीज लाने का कोई फायदा ही नहीं है। सरकार, भाई हम रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे फेवर में काम नहीं करेंगे, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू देम, देयर इज नो पॉइंट हैविंग देम। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये भी एक सुप्रीम कंट्रोल जो है एक्सरसाइज करते हैं ओवर द गवर्नमेंट, राइट। इनके अंदर भी पावर्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट को बाउंड करती हैं, टेंड करती हैं टू चेंज द पॉलिसीज व्हिच आर नॉट इन फेवर ऑफ द जनरल पब्लिक। आई होप आई एम क्लियर एंड अंडरस्टूड विद दिस। Yes, ma'am. And they pressurize people to Yes, vote. Right? ma'am. No, they don't pressurize the people. They pressurize the government by agitating, by demonstrating, by highlighting the loopholes and the shortcomings of the policies that the government is going to initiate. Ma'am, so है ना, that जैसे they may जैसे एक not बहुत छोटी come सी in. चीज है। Ma'am, it is like the Soviet government. Ma'am, that is ना formed ना ना in. ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इट इज नॉट लाइक, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सोवियत गवर्नमेंट नहीं। ये लोग बेसिकली, देखो हम सीधी सी चीज बताते हैं, बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो बहुत तरीके की डिमांड रखता है, ठीक है। अब सारी डिमांड्स तो उसकी नहीं मानी जाएंगी ना, नहीं मानी जाएंगी ना, Yes, कि ma'am. मानी जाएंगी नहीं। तो Ma'am, सारी नहीं मानी वो जाएगी. डिमांड्स जो कि कहीं ना कहीं हाँ, वो डिमांड जो अनजस्टिफाइड है, जिनका कि कहीं से कहीं कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उन डिमांड्स को नहीं माना जाता है। और वो डिमांड्स मानी जाती है जो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए ठीक रहती हैं। तो गवर्नमेंट भी यही करती है, प्रेशर ग्रुप्स उन चीजों को हाईलाइट करता है जो कि लोगों के लिए के वेलफेयर में नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेशर ग्रुप कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। वो जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जेन्युइन चीजें होती हैं, उनको हाईलाइट करके गवर्नमेंट को ये को प्रेशराइज करता है टू चेंज द पॉलिसीज। जैसे एक हम एग्जांपल बताते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक चलाया गया था, जिसमें कि
नर्मदा के ऊपर डैम बनाने की वो करी जा रही थी। तो ये हुआ कि भाई लोगों ने कहा कि भाई जो भी वहां के लोकल थे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, और बहुत एजिटेशन हुआ था इसके लिए। लोगों ने मना करा कि भाई वी डोंट वांट दैट द डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड हियर, बिकॉज इससे जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे, बहुत मुश्किलें होंगी। तो जो प्रेशर ग्रुप थे ना, उन लोगों ने एजिटेट किंग डैम्स ओवर दैट। तो इसकी वजह से, लोगों के डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से, ये जो प्रेशर ग्रुप्स थे उनकी प्रेशर देने की वजह से, जब बाकी लोग अवेयर हुए तो उन्होंने सरकार को प्रेशराइज करा कि आप जो है हम नहीं करेंगे यहाँ पे, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैड टू डू अवे विद दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. नाउ इट इज क्लियर नो? हाँ, बस मोटिव यही होता है कि जो भी गलत पॉलिसीज है सरकार की, उनको किसी भी तरीके से हटा दिया जाए ताकि जनता का भला हो, उनका नुकसान ना हो। ठीक है, राइट? Yes, ma'am. राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बेटा, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना क्लियर है सब कुछ? आई होप ऑल दीज 4 power sharing forms are clear and understood by all of you. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The time is, the class is about to get over. So tomorrow I'll be doing flowcharts with you, all the flowcharts that I have for this particular chapter, right? Right, Yes, class? ma'am. Okay, ma'am. Fine. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, beta. Thank you. Okay. Yes, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.